Welcome in quadratic equation part 5. In this part, we want to solve two important questions based on nature of roots of a quadratic equation. In the previous video, we discussed about nature of roots. Let us see these two problems in this video based on it. First problem is find the value of k for which the following equation has equal roots. An equation given. This equation has equal roots, means its both the roots are equal. For that, what should be this k? This is what is your first question. Second question is find the value of k for which the equation x square plus 5kx plus 16 has no real roots. This equation will have no real roots. It means its both the roots are imaginary. Then what will be this k? ये k कितना होना चाहिए ताकि इसका दोनों रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो ही रूट्स होता है, वो दोनों रूट्स रियल नहीं होंगे. रियल नहीं होगा मतलब इमेजिनरी होगा. तो उसके लिए k का वैल्यू आपको निकालना है. थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं उसको. नेचर ऑफ रूट्स. फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is a quadratic equation where a, b, c are constant and a not equal to 0. ये तो आप जानते हैं कंडीशन. Its roots means value of x which satisfy the equation, and its roots are minus b plus minus root d by 2a. These are the two roots of this quadratic equation, where what is d? D is your b square minus 4ac. This is written as d. Now, both the roots of this quadratic equation depends upon this d. How? If this d is equal to 0, ये अगर 0 हो जाता है, this part will be removed. So both the roots will be minus b by 2a. दोनों ही रूट फिर minus b by 2a होगा, माने दोनों इक्वल होगा. और माइनस b is a real number, a is a real number, so minus b by 2a is a real number. So in this case roots are real होगा और इक्वल होगा. ठीक. अगर d पॉजिटिव हो तो ये अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो इसका रूट एक रियल नंबर होगा. माइनस बी प्लस एनी रियल बाई एनी रियल विल गिव्स यू ए रियल नंबर. माइनस बी माइनस रूट डी विल बी ए रियल. एक पॉजिटिव नंबर का रूट एक रियल नंबर होता है बाई रियल नंबर. तो ये पूरा जो है ना दोनों ये रियल नंबर होगा. बट इन द फर्स्ट केस दिस रियल नंबर रूट डी इज एडेड. इन द सेकेंड केस रूट डी इज सब्ट्रैक्टेड. दो रूट होगा, एक में ये रूट डी ऐड किया हुआ, दूसरा में सब्ट्रैक्ट किया हुआ, तो दोनों रूट अलग अलग आएंगे और रियल नंबर आएंगे. रूट्स आर रियल तो होगा बट अनइक्वल. रियल होगा लेकिन अनइक्वल. और अगर d छोटा हो गया 0 से, d छोटा मतलब ये नेगेटिव हो गया. रूट के अंदर अगर कुछ नेगेटिव लिखा हो, जैसे -5 है, -25 है, ऐसा, दीज आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स. ओके, तो ये हो जाएगा इमेजिनरी. इसका कोई रियल वैल्यू नहीं निकलता है रूट के अंदर अगर माइनस है तो. अब इमेजिनरी को किसी में जोड़ेंगे, इमेजिनरी को किसी से घटाएंगे तो भी वो इमेजिनरी होगा, और उसको फिर किसी रियल नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी इमेजिनरी होगा. माइनस बी प्लस इमेजिनरी, माइनस बी माइनस इमेजिनरी, इमेजिनरी डिवाइडेड बाय एनी नंबर इमेजिनरी, means both the roots will be imaginary and unequal. Same imaginary is added, same imaginary is subtracted. So in both the cases different answer will come. So roots are imaginary and unequal. In this case roots are not real. In this case imaginary and unequal. इमेजिनरी और अनइक्वल होगा.
So you must remember this. When discriminant 0, roots are real and equal, and roots are real and equal, then d must be 0. Roots are real and unequal, then d must be greater than 0. When roots are imaginary and unequal, then roots must be less than 0. Okay, then root must be less than 0 in case when roots are imaginary. Imaginary, whether equal or unequal, in both the cases d must be negative. Okay, अनइक्वल होगा, इक्वल होने से भी इमेजिनरी के केस में d को नेगेटिव ही होना होगा. ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन x² प्लस 5kx plus 16 equal to 0 has no real roots. No real root means both the roots are imaginary. Roots are imaginary only when d is less than 0. Okay, and roots are real and equal only when d is equal to 0. In that case roots are real and equal. रियल खाली बोलने से ये दोनों केस में रियल होता है. रूट्स आर रियल खाली अगर बोलते हैं, इक्वल और अनइक्वल वट एवर इट में बी. रियल कब होता है? जब d ग्रेटर देन 0, इसमें रियल होता है. और कब होता है? जब d इक्वल टू 0. सिर्फ अगर बोला जाए कि when roots are real then discriminant is either greater than 0 or equal to 0. It is true from both sides. If d is greater than or equal to 0, roots are real. इक्वल के केस जब ये इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स आर रियल एज वेल एज इक्वल. जब ग्रेटर होगा तो रियल होगा, साथ में अनइक्वल होगा. तो ये दोनों केस में रियल होता है, आइदर ग्रेटर और इक्वल टू 0. So these many things you have to know about nature of roots, and both the problems are based on these results. Here root equation has equal roots. Equal root means here it is equal, real and equal, then discriminant must be 0. And here both the roots are imaginary, no real roots. Imaginary means discriminant must be less than 0. So that will be used in this problems. So I hope you have understand these things. Now see the problems. So first of all, let us solve this question. Second one, then we solve this question. Find the value of k for which the equation thus has no real roots. You will write simply given in this way EQ, and we write for equation. Given equation is x² plus 5kx plus 16 equal to 0. Here what is a? What is b? 5k. And what is c? 16. It is of the type ax² plus bx plus c. So a is here 1, b is 5k, and c is 16. You find d. First of all you will find d. d is b square minus 4ac. b square 5k square, 25k square, minus 4ac. a means 1, c means 16. So it is 25k square minus 64. This is your d. Okay, question is, this equation has no real roots, means both the roots are imaginary. For imaginary roots, d must be negative, d must be less than 0. This implies, what is your d? d means this 25k square minus 64. This must be negative. It means 25k square.
should be less than 64. This 64 will go to that side, is not it? Now you will see here, and we can write this implies k square is less than 64 by 25. This 25 will go down. जैसे इक्वल साइन में होता है दूसरे साइड जाता है, वैसे ही ये लेस देन साइन में भी होगा. ठीक है. सो व्हाट इज कमिंग? k square is less than 64 by 25, or you can write k square is less than, it is 8 square. 8 square, this is 5 square. So you can write 8 by 5 whole square. This can be written as 8 by 5 whole square. Okay. Now you have to know one result. See here, if x square is less than a square, if x square is less than a square, then x must lies between a and minus a. If x square less than less than a square, then x must lies between minus a and plus a. X should be less than minus a, x should be less than a and greater than minus a. Let us see an example here. If x square is less than 25, 25 means it is 5 square, then your x must be less than 5 and greater than minus 5. x का वैल्यू 5 से छोटा होगा तो उसका स्क्वायर 25 से छोटा होगा, और अगर माइनस 5 से बड़ा होगा, माइनस 5 से बड़ा मतलब जैसे माइनस 4, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, दीज आर ग्रेटर देन माइनस 5, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 25 से छोटा होगा. ठीक है. तो आपको ये चीज याद रखना है कि इफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर, देन एक्स इज लेस देन ए एंड ग्रेटर देन माइनस ए. So same thing will be used here. So here k must be less than 8 by 5 and greater than minus 8 by 5. K should be less than 8 by 5 and greater than minus 8 by 5. ये होना चाहिए k का वैल्यू. Find the value of k for which the equation x square plus 5kx plus 16 has no real roots. For that, ये जो k है, इस k का वैल्यू 8 by 5 से छोटा और माइनस 8 by 5 से बड़ा कोई भी नंबर आप ले सकते हैं. तो इस इक्वेशन का रूट्स रियल नहीं होगा, इमेजिनरी होगा. इज द आंसर. सो आई होप you have understand the problem. Now come to the first question. First question is, find the value of k for which the following equation has equal roots. Its roots are equal. Here, what is a? In place of a, it is k minus 12. In place of b, it is 2k minus 12. In place of c, it is 2. It is of the type ax square plus here one x is left in this question, plus 2. Just a minute. It is in this way. This must be x तो टर्म रहेगा ना इसमें. Let me check the question where it was. Yes, x is there. Okay.
k minus 12x स्क्वायर प्लस 2k minus 12x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये x देखिए छूट गया था, इसको लिख लीजिए, तब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का हुआ ना। सो इट इज ऑफ द टाइप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हियर इन प्लेस ऑफ a इट इज k minus 12, in place of b it is 2k minus 12, in place of c it is 2. Okay, you find first d. D is b square minus 4ac. What is b square? 4k minus 12 square, 2 का स्क्वायर 4 इसका स्क्वायर, minus 4ac. a means k minus 12 and c means 2. This is your b square minus 4ac. Let us simplify it. 4 can be taken as common. Okay. And k minus 12 also can be taken as common. k minus 12 भी दोनों जगह कॉमन होगा, तो यहाँ बचेगा क्या, ये कॉमन हो गया, एक कॉमन हो गया, तो k minus 12 माइनस ये 4 कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, बचेगा क्या, 2. Yeah. So this is 4 k minus 12 into k minus 14. ये minus 12 minus 2 minus 14. This is what is your D. Okay. Now the equation has equal roots, so you will write simply for equal roots. Equal roots के लिए क्या होता है, discriminant must be 0. It is true from both sides. This implies, what is its discriminant? D. ये 4k minus 12 k minus 14, this should be equal to 0. From here you have to find the value of k. यहाँ से आपको k का वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। क्या होगा, नहीं देखिए, this is equal to 0. It means either this equal to 0 or this equal to 0. This 4 cannot be 0. This is a constant. 4 will go to that side. 0 by 4 0. So we write either k minus 12 equal to 0 or k minus 14 equal to 0. This implies either k equal to 12 यहाँ से और k equal to 14 from here. So two possibilities are there. Either value of k is 12 और value of k is 14. k का वैल्यू या तो आप 12 ले लीजिए या तो 14, इसका रूट्स इक्वल आएगा. So in this way we can solve problems based on nature of roots. Similar more problems, number of problems are there in your book. So I have solved at least 4-5 problems. You should try yourself from your books. So in this video this much. In the next video, means in part 6, we try to solve some application problems, or you can say language problem based on quadratic equations. So in this video this much. Thank you for watching.